Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna talk about how to apply a fake eyelashes and which brand you need to take. And there are a lot of things like synthetic, natural, and it doesn't look good. It looks very fake on the eyes. Every single thing will be covered in this video. In the start, like I was not knowing which one is the right one, so I used to experiment. I used to purchase so many eyelashes. As I even got this eyelash from Amazon because we think, like, at the cost of 200, 300 rupees we get it the 5 pair and it's gonna be nice. But trust me, I have never used it. On the eye especially, it doesn't look nice. It doesn't feel that natural after doing the overall eye look. So this is a reason where I don't prefer using such kind of a eyelash. It looks very, very fake. So before you get something, make sure what type of a eye look you are creating. Either you are creating very voluminous eye, or maybe something very natural. So depending on that, you have to take and you have to pick the eyelashes. As again, this is how it is, and it is very plasticky, so I just don't prefer. So this is just a waste of money for me because I never used it. If you see, it's full tag. मैंने return भी नहीं किया वो time पे, so just ऐसे ही है. And secondly, there are again 3D fogs or something, like 3D effect eyelashes, like upper niche lot of eyelash. Again, this was something I have used it, but it is little voluminous one. So again, I found it very thick tack wala thing. 5 things which I'm gonna talk about this eyelashes where your eyelash doesn't look nice. So मैं आपको लगा के दिखाने वाली हूँ. Feel that ये तो अच्छा eyelash है, it's gonna look nice. Why it's not gonna give you that good finish? Yeah, I'm gonna prove this for this. Like एक eyelash लगा रही हूँ मैं, ये वाला ही लगा रही हूँ on my eyes. And क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं वो ये वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ. I'm just applying the glue. So once you apply the eyelash glue, directly नहीं लगाना है. You have to keep it like at least for 30 seconds. Dry होने देना है, फिर ही लगाना है. And the main part, applying it this. हम क्या लगा देते हैं eyelash को ऐसे ही, ड्राई होने देते ही नहीं है और ऐसे ही स्टिक हो जाता है, फिर चिपकता नहीं है. This is how we put. मैंने लिटरली ऐसे टाइप के eyelashes लोगों को लगाते हुए देखा है, तो मैं वैसे ही टाइप पे प्लेस कर रही हूँ जो everyone are doing a mistake. So guys, this is how it looks. जो आपका एज भी बराबर स्टिक नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बराबर स्टिक नहीं है, और वो निकलता जाता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. सो आपको अच्छे से ग्लू लगाना है. You have to stick a nice glue. You have to take a nice layer of glue on the eyelash band. और ऐसे ही देखो, ये हवा में उड़ रहा है. आगे कहाँ स्किन के ऊपर आप स्टिक कर रहे हो. बहुत बेकार स्टिक है ये. बिल्कुल सही तरह से आपने स्टिक नहीं किया. ये देखो, ये हवा में उड़ रहा है, आगे से प्रॉपर्ली स्टिक नहीं है, स्किन के ऊपर है, आईलिड के ऊपर आपने स्टिक किया है विदाउट फॉलोइंग द लैश बैंड. रियल नेचुरल बैंड आपको वो फॉलो करके करना है. एंड दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी. आई विल नॉट लाइक इट इफ आई apply on myself or being a client. If someone is doing this kind of replacement, I'll never accept it. So ये रीजन के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से आई लैशेस चूज करना है. एंड बीइंग न्यू आर्टिस्ट, आपको कुछ पता ही नहीं है और आप ऐसे टाइप के आई लैशेस भी खरीद लेते हो, ऐसे वॉल्यूमिनस, और ये सारे नहीं चलते एवरीडे बेसिस पे. आप लगाओगे तो कोई क्लाइंट भी प्रेफर नहीं करेगा. आई तो जस्ट डोंट नो, ये कैसे ना ड्रामेटिक आई लैशेस है जो आपको कुछ फैशन और समथिंग हॉरर लुक क्रिएट करना होगा, देन ओनली इट विल वर्क. दिस काइंड ऑफ बिग बिग eyelash, big size, voluminous size. Can you see it, guys? Make sure आप खरीदो मत, waste of money है. This is again 3D fox और 4D fox mink eyelashes, waste of money. Again, ये वाला भी मैंने सस्ता वाला Bonjour Paris natural 3D, it's they have named it as a natural 3D eyelash. सोया सिलेक्शन. ये भी देखो ऐसा प्लास्टिक जैसा है, 2-3, मतलब इट्स अगेन बड़ा छोटा, बट स्टिल ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. 100 रुपए का है, मुझे नहीं अच्छा लगा.
I'll never prefer this kind of lashes. So lashes has to be nice, otherwise आपका look खराब हो सकता है. Okay, and one more thing, I was talking about this eyelash only जो मैंने ये लगाई है. देख लो कितना प्लास्टिकी लग रहा है आईज क्लोज करने के बाद में. बिल्कुल भी नेचुरल इफेक्ट नहीं है और एकदम थिक है. लाइक पतले जो नेचुरल आईलैश के लैश होते हैं वैसी फीलिंग ही नहीं है, सब पोक हो रहा है. तो ये रीज़न की वजह से दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम गोना यूज़ इट. एंड या दिस इज़ हाउ इट इज़. आई विल नॉट प्रेफर इट. और स्पेशली आप देख रहे हो आईज डाउन होने के बाद में ये जो एकदम डार्क कलर्स जो दिख रहे हैं शेडो के, एकदम वो डार्क कलर आईलैश का दिखता है एंड दैट इट क्रिएट्स अ शेडो ऑन द आईज which make it feel like very fake, very fake. किसी को भी पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. It won't look natural at all. So always make sure when you are closing the eyes, आपका जो eyelash placement सही होना चाहिए. और ये eyes close करने के बाद में ये डार्कर टोन ऑफ eyelashes नहीं दिखना चाहिए. It should look very natural because यहाँ पे एकदम डार्कर कलर है and then the lashes goes in a curling form. It doesn't look that good. It doesn't look good, guys. It doesn't. I personally will never prefer it. But yeah, this is a reason where you need to choose before. After purchasing so many, now I know what I like. So that is something what I'm gonna teach you in this video. और मैंने बता दिया ये ऐसा है. Ah, this is very very bad. Eyelash band भी नहीं लेना है. So now lately I started purchasing this kind of PAC and this is so natural. I love it because when I'm putting on my eye, it doesn't make me feel heavy. Otherwise मुझे वो heaviness की वजह से I will never prefer it. I want to have a natural kind of eyelash. So I like तीन तरह के numbers मुझे बहुत पसंद है. 52, 53, 54. 54 किधर है? देखो ये तीन है. So I'll start with the 52 number से. 52. Again, this is very very natural. Like this how the shape is. छोटे से बड़ा and it is in a curve with a proper curved, and I like this. It's very very natural. Even on the hooded eyes, small eyes, ये वाला number test है PAC का 52. And again this is one eyelash I guess 299 250 when it's a discount आपको 200 में भी मिल जाता है. It's not so expensive guys, ये बहुत reasonable rate में है. And second is 53. ये थोड़े कम उसके लैश है, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लैश है. अगेन ये भी ऐसे है छोटे से बड़ा. लाइक इफ यू सी द कर्व्ड, इट इज अ टेपर्ड कर्व. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. एंड दिस इज 54. एक ही लाइन में आपको चाहिए 54. लाइक आपको छोटे से बड़ा वाला कर्व नहीं चाहिए तो आप एक ही पैटर्न में आप ले सकते हो. एंड दिस ऑल्सो वेरी नेचुरल 54. वेरी वेरी नेचुरल. अगेन इसमें थोड़ा 3D इफेक्ट भी दिया हुआ है विद द नेचुरल. So I majorly use 52 on my clientele and my client also love this number. So yeah, this is something what I've been using it lately. And if you see the lash band, guys, see the lash band कितना पतला है और आप ये सारे lash band देखो जो इतने thick है. No, it's not gonna give you natural effect if you use such kind of eyelashes. So I'm gonna use this one. Now I'm gonna show how to use this. And can you see how natural the band is? Very natural. Proper lash curl. First step is doing a lash curling, then applying a mascara. Then you have to pick the eyelash. Most simple, take the measurement. आपको ज़्यादा पीछे से भी नहीं लेना है. इफ आपने eyelash थोड़ी आगे लगा दी तो आँखों में पोक हो सकता है. So you have to just follow the natural eyelash. कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से एंड एंड में टिप पे पहले मेजरमेंट लेना है. I believe this will work on my eyes. I don't have to chop it. This will go nicely. So I'm gonna put the glue. Where is my glue? Glue is also from PAC. I really like PAC ka glue and PAC ki eyelashes.
अच्छे से आपको आगे पीछे अच्छी क्वांटिटी में ग्लू लगाना है। और हम गलती क्या करते हैं, हम लगाने के बाद में उसको ड्राई होने नहीं देते हैं और डायरेक्टली हम आईलैश पे लगा देते हैं, जो हमें नहीं करनी है ये गलती। यू हैव टू कीप इट फॉर 30 seconds टू dry this out, little dry. So how you wanna do it? You have to follow your lash line. So dry हो गया. Then you have to understand from where you have to make the placement. Dry होने के बाद में attach first in the center. Where is the plucker? Have your plucker in your hand. This plucker. आपको पहले सेंटर में स्टिक करना है, फिर एंड टिप पे स्टिक करना है। So guys, I have attached the eyelash दोनों eyes पे। Do you see how natural is this? मुझे बिल्कुल भी heavy नहीं लग रहा है, but even at the same time it's giving my eyelash proper curling. मैंने अच्छे से लगाया है। Okay, so now I'm gonna apply one coat of mascara so that my natural eyelash and my fake eyelash get merged together. बट ज़्यादा कोट नहीं लगाऊंगी, बहुत ऊपर ऊपर से कोट करूंगी, so that I have to reuse this as well, right? I cannot throw it after using once. तो मैं ऊपर ऊपर कोटिंग करूंगी just to merge it. And if you feel कि आपका वो दोनों अलग से और दिख रहा है, तो you can even take the eyelash curler to all the hair. Wow, this looks so nice. अच्छे से आपका कर्ल्ड भी हो रहा है. So it's again very small things of detailing. I love it. I just love it, and even at the same time, it just doesn't make my eye look heavy. Heavy तो मुझे बिल्कुल if थोड़ी भी heavy होती है, I feel start irritating. बहुत ज़्यादा irritation होने लग जाता है. Now I'm just gonna take little coat of mascara. What do you think, guys? Is this looking nice or not? Let me know in comment section. If आपको ज़्यादा curling नहीं भी चाहिए, then you can just apply eyelash. Don't do eyelash curling if आपको ये curl वाला पसंद नहीं है तो. And the one most important thing is when you close the eyes, थोड़ा बहुत glue जो दिखता है that looks very bad. So you need to take a eyeliner, black eyeliner, just cover that glue. You don't have to make it thick eyeliner or something. If you want to go with that look, you can go. But I normally prefer for the natural look, eyelash stick करने के बाद में just applying one line on the fake lash to give that more kind of a neat finish. So guys, this is how it should look nice. I love it. The overall effect of the eyelash looks very pretty. Now I'm gonna tell you what all thing you need to focus on. आगे और पीछे से eyelash निकलना नहीं चाहिए, और if आपका सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे से निकल रहा है, take a glue, like just a little glue from directly from the brush or directly from the glue wand, and just take आगे और पीछे जा है, keep it again थोड़ा 10-20 seconds ड्राई होने दो और फिर स्टिक कर दो. आपको इसके लिए पूरी eyelash निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर ही स्टिक करना है. That's how I normally do on myself, on my client, and this looks so pretty. So guys, this is how it looks, the overall effect of the fake eyelash. It should look natural, at the same time it doesn't feel heavy on my eyes. It looks nice, you know, बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा uncomfort होता है when you are applying for the first time, but when you are keep doing it, you get used to it,
I personally like the number of 52. I use a lot, so this is the reason I'm recommending. And other than that, this is how you need to do. That's all. It's a very simple tips and tricks what I've shared in this video. I hope you like it, and do try and let me know in comment section what all problems you are getting when you're applying a fake eyelashes. As I mentioned, don't use something very thick band or something very plasticky. Skip using that. Try to have very thin kind of a eyelash band so that it looks very natural on the eyes. And even the eyelash, this kind of a hair also should be have some spacing in between, so it gives you a more natural effect. But if you want to have more kind of a voluminous, try to have little volume. But if you are taking too much of dramatic, it's definitely gonna make your eyes little heavier. But if you're comfortable with that, you can go. But I prefer to have very natural kind of a lash, because the thing what I believe is, when you have a lot of voluminous eyelash, your eyeshadow just get hide. And as today I've not applied anything eyeshadow, but in case you're going with eyeshadow and you want to have the natural mindset that you want to go ahead, then always go with a natural kind of lashes as well. And if you want more option from PSC, you can even go with this Euro Paris, Europaris, Euro Paris 6 number. Oh, this also looks very, very natural. It also gives you kind of a 3D mink effect, but with a very natural lashes. Like, I really like this. My client loved this one. I've been using on Urvashi Rotel. I've been using on multiple different clients. So this is also one of my favorite. Number 6. You can note down if you want. Yeah, so this is something what I'm really sharing my insight to you guys. I hope you are loving it. Don't use so much eye magic, not so much fond of it. But yeah, if you wanna have that, one more tip and trick, take a band. See, it's so thick. अब तोड़ दिया मैंने तो. चलो ठीक है. आप है ना बीच बीच में कट करके इंडिविजुअल eyelash लगा सकते हो. If you don't want too big or something, I've been doing this. Cut करो. The band is very thick. Make the band thinner. Make this band thinner and then apply. So maybe it will look nice. Chop it properly according to your eye measurement. And if you follow all such steps, your eyes and your fake eyelashes doesn't look fake. It will look very natural. And that's all. We all want the effect, right? So guys, this is how it's looking. I hope you like it. If you like this video, please click on the like button, share, comment, and subscribe to my channel so that you are updated with all of my videos. Bye.